वेलकम अगेन टू फिजिक्स गैलेक्सी। सो कल टीएफआर एग्जाम में एक प्रॉब्लम आया था। सो इट्स अ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। हमारे पास एक वेज ब्लॉक गिवन था इस तरह का। सो इट्स मास वाज m और एक छोटा सा ब्लॉक m था। लेट जस्ट कॉल इट स्मॉल m। ओके। और ये रिलीज किया गया था एट रेस्ट और हमको बताना था इस जो बड़ा वाला वेज है इसका एक्सेलरेशन कितना है। लेट जस्ट कॉल इट a x। सो ये हमको बताना था ये एक्सेलरेशन कितना होगा। ओके। So let's solve this problem. Let me draw it very carefully now. So इस तरह का हमारे पास एक वेज है, इस तरह का हमारे पास एक वेज है और एक मास m है। This is our mass m. Okay. And let's draw the forces for the small mass. So इस पे नॉर्मल एक्ट करेगा. Let's call that n. Okay. And इस पे ग्रेविटी भी एक्ट करेगा. That will be mg. Right. और यहाँ पे हमारा m थीटा क्या? That is no. तो हम क्या कर लेंगे, हम रिजॉल्व कर लेंगे फोर्सेस को पहले। ओके। सो लेट्स रिजॉल्व द फोर्सेस इन द एक्स वाई बेसिस। सो दिस इज माय एक्स सिस्टम एंड दिस इज माय वाई। ओके। तो अगर हम फोर्सेस देखेंगे, एन का वाई कंपोनेंट जो होगा दैट विल बी, लेट्स ड्रॉ दैट बाय डिफरेंट कलर। हाँ, सो जो एन का कंपोनेंट होगा वाई डायरेक्शन में दैट विल बी एन cos of theta, right? So that will be n cos of theta, right? Minus, नहीं, हमको उल्टा लिखना पड़ेगा। So हम ऐसे लिखेंगे mg that is this force minus n cos of theta, n cos of theta equals to mass times the acceleration in the y direction. Okay, ay. Let's just call downward direction as the plus direction and upward as the minus y. Okay. Then let's break the component forces in the x direction. So it will have n का ये वाला component, right? So it will be n sine of theta. So n sine of theta, that is the only force acting in the direction because mg का तो कोई x component नहीं हुआ. So n sine of theta equals to m times a times direction, right? This is all the forces on small m, right? These are the forces on small m. Now let's write for capital M. तो इस पे कितना फोर्स लगेगा, इस पे तो G लगेगा mg, बट दैट विल बी बैलेंस बाय द जो ग्राउंड दे रहा होगा नॉर्मल, उससे कुछ नहीं मिलेगा हमको, राइट? सो द ओनली फोर्स अदर देन mg विल बी इसका नॉर्मल जो इस पे लगेगा इस डायरेक्शन। So that will be equivalent. So n sine of theta will be equals to mass times acceleration of this wedge ax. So हमारे पास तीन इक्वेशंस आ गए। नाउ वी वांट टू सॉल्व इट फॉर ए वाई। सो ए सॉरी ए एक्स ये हमको निकालना है, राइट? बट यहाँ पर अगर हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं। सो वी हैव ए एक्स वन वेरिएबल, ए वाई अनदर वेरिएबल, ए एक्स अनदर वेरिएबल एंड वी हैव एन। सो फोर वेरिएबल्स हैं हमारे पास, राइट? सो फोर वेरिएबल्स, बट इक्वेशंस कितने हैं हमारे पास? तीन ही इक्वेशंस। सो वी हैव ओनली थ्री इक्वेशंस। सो हमको एक और इक्वेशन चाहिए टू सॉल्व इट। सो वो कहाँ से मिलेगी हमको? बिकॉज ये हमेशा जो छोटा मास है इट्स ऑलवेज स्टिंग ऑन द वेज, इट्स ऑलवेज इन कांटेक्ट। तो हम एक कंस्ट्रेंट इक्वेशन लिख सकते हैं। ओके, कंस्ट्रेंट इक्वेशन लिख सकते हैं दैट विल बी सिंपली कि जब भी नीचे नीचे आ रहा होगा मास, पहले यहाँ पे होगा सपोज, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, तो इट्स ऑलवेज स्टेइंग ऑन दिस सरफेस, है ना? तो एट एवरी पोजिशन वी कैन ड्रॉ दीज लाइन्स एंड हमको ये पता चलेगा कि एट एवरी टाइम, जूम करके देखेंगे, जूम करके देखेंगे तो हमको ये पता चलेगा कि ये वाली डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस बाय दिस डिस्टेंस। सो
So this distance by this distance is always maintained. Okay. So this distance by this distance is always maintained for small mass m. Okay, that means we can relate it with the tan theta, right? So, sorry. So we can write constraint equation. So let me write the constraint equation. Constraint equation as so tan of theta will be always equals to acceleration divided by the acceleration in the x. So acceleration in the x कितना है वहाँ पे sorry y में कितना है that is ay और x में कितने हैं दो acceleration थे we have ax plus ay. So this is it. So now we have four equations, four variables. Now we can solve these for ax. All right. So let's write ax. So ax कितना होगा? So ax जो हमको मिलेगा इस equation से ax will be equals to n by capital M sine of theta. This is it. Now we need to solve for n. So n हम यहाँ से tan theta से निकालेंगे. Tan of theta will be equals to ay के बदले क्या निकालेंगे? That will from this equation it will be g minus n cos of theta. Okay, मैं divide m से कर रहा हूँ यहाँ पे. Divided by m divided by ax plus a capital X. Sorry, capital X. Right. So x किसके बराबर है? That will be n by m sine of theta and then plus ax किसके बराबर है? x इसके बराबर है that is n by capital M then we have sine of theta. Okay, let's simplify it a bit. So this will give me n. So मुझे actually n निकालना है यहाँ से so that I can plug it here, right? So so I can write n यहाँ से अगर मैं निकालूंगा इन दो से कॉमन निकाल के n so then I have to multiply tan theta sin theta divided by small m, okay, ये वाला term plus tan theta sin theta divided by capital M, okay, और यहाँ से भी n है मेरे पास so प्लस में आ जाएगा प्लस cos theta by small m equals to g, okay, क्योंकि ये वाला g था, राइट. So n किसके बराबर आ जाएगा यहाँ से? So n will be equals to g divided by tan theta sin theta and then I have 1 over m plus 1 over capital M plus cos theta by small. Now I have n. Now I can plug it into my this equation. Okay, let's do it very quickly. So finally ax जो हमारे पास है that will be sin theta by capital M multiplied by n. So n is a g divided by tan of theta sine of theta and then we have 1 over small m plus 1 over capital M plus cos of theta by m. Okay, now we can simplify it a bit. Or so we can write it as g sine of theta divided by g m total है multiplication है. So we can write it as m. Then we have sine squared theta by cos theta, right? 1 over m plus 1 over capital M cos of theta by m, right? अगर हम यहाँ पे
do one more thing. So यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे मैं cos of theta को multiply करना होगा, so then it will be square. ओके, और जो ये cos theta है उसको मैं हटा के ऊपर ले जाऊंगा, so cos of theta, right? So जो हमारे पास ax मिल जाएगा अल्टीमेटली, that will be g sin theta cos theta divided by, अब यहाँ पे क्या है, okay, let me write on one a sentence. So this will be sin square theta m plus m divided by m into m plus cos square theta divided by m. I can multiply m, I can multiply m. So this m and m, इसको मैं ऊपर ले जा सकता हूँ, हटा सकता हूँ, और फाइनली जो हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा, so acceleration for the Planck, that will be the m will get cancelled out, it will be g m sin theta cos of theta divided by, now sin square theta cos square theta capital M, that will become m plus m sin square theta. So this was your answer.